अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट को। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी भी शेयर कर ली हूँ। जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है एज़ इट इज़, आप लोग अपनी नोटबुक उठा लें, हेडिंग्स वगैरह दे लें, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं। मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, और अगर आप लोगों को मेरी जो नोट्स हैं अगर अच्छे लगते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलता रहे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कहीं वीडियो ज़्यादा लंबी ही ना हो जाए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी सबसे पहले देख लें। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट बेस्ट नोन फॉर लिरिकल बैलेट विच ही रोट विद सैमुअल टेलर कॉलेज टी कॉलेज, ठीक है। He and Coleridge helped to launch the Romantic Age in English literature. He was born in 7 April 1770 and he was died in 27 April 1850. William Wordsworth was one of the most important personality of Romantic poetry because his poetry and philosophy are representative of the Romantic movement. He went to study at Cambridge University and did his BA in 1791. Together, Wordsworth and Coleridge produced Lyrical Ballad in 4 editions: 1791, first edition, and in second edition in 1800, and third edition in 1802, fourth edition in 1805. William Wordsworth was also known as the father of nature poetry. William Wordsworth, best known for Lyrical Ballad. William Wordsworth is known as the father of Romantic poetry because of his literary ability and presentation of emotions. He was died in 23rd April in 1850. अब आ जाते हैं जी प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट को डिस्कस करते हैं। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट इज़ एन essay composed by William Wordsworth for the second edition published in 800 of the poetry collection Lyrical Ballad, and then greatly expanded in the third edition of 1802. अच्छा, आपने ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है ना, इसको छोड़ दें, आप इसको स्किप कर दें, आपने ये नहीं लिखना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। The preface to the Lyrical Ballad was a manifesto of romantic poetry in which Wordsworth justifies the kind of poetry which he has written in a volume of Lyrical Ballad. अच्छा, वर्ड्सवर्थ ने इसमें डिस्कस क्या किया है, उसने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में जैसे उसने वो पोइट्री डिफाइन की है, जस्टिफाई की है, जो उसने खुद लिखी थी लिरिकल बैलेड के अंदर, ठीक है। बेसिकली वर्ड्सवर्थ वाज नॉट अ क्रिटिक like Johnson, Robert. They were regular critic, pure critic, but Wordsworth was a poetic critic. As a poetic critic, he justified a kind of poetry that he has written. On the other hand, if a person is a pure critic, he will justify, he will take in count all kind of poetry, not just one kind of poetry. अच्छा, ये पैराग्राफ बड़ा अच्छा है, कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होता है। अगर आपका नहीं हुआ तो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। वर्ड्सवर्थ जो था वो क्रिटिक नहीं था, ठीक है। रॉबर्ट वगैरह जो थे वो क्रिटिक थे, देवर रेगुलर क्रिटिक, वो रेगुलर क्रिटिक थे, प्योर क्रिटिक थे। बट वर्ड्सवर्थ जो था वो पोइटिक क्रिटिक था। एज अ पोइटिक क्रिटिक जो होता है ना, वो जस्टिफाई करता है सिर्फ अपनी पोइट्री को, लेकिन अगर वो जो है वो पोइटिक क्रिटिक ना हो, देन ही ऑन द अदर हैंड इफ़ अ पर्सन इज़ अ प्योर क्रिटिक, अगर वो प्योर क्रिटिक हो तो फिर सारी जो है पोइट्री को, हर टाइप की पोइट्री को जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर जो पोइट है, अगर वो पोइटिक क्रिटिक हो तो सिर्फ एक पोइट्री को वो करेगा जस्टिफाई जो उसने खुद लिखी होगी, ठीक है। क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने खुद ही लिखी थी, तो उसने ही जस्टिफाइड द काइंड ऑफ पोइट्री दैट ही हैज़ रिटन इन अ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड. But in his preface to the Lyrical Ballad, he is actually justify the kind of poetry which he has written in a volume of Lyrical Ballad. अच्छा, what is poetry? According to Wordsworth, poetry is a spontaneous overflow of powerful feeling reflected in peace, ठीक है। उसके बाद आ जाता है poetry can be a sad or happy. Internal feeling of the poet produce poetry. It is a matter of feeling and temperament. True poetry cannot be written without proper mood and temperament. Poetry is not made. Poetry is the flow of your emotion. It's flow from the experience of your life.
The next thing which is discussed by Wordsworth in Preface to the Lyrical Ballad is what is poet. A poet is a man speaking to man, greater knowledge of human nature, had a good memory and can imagine the absent things. It turned into emotions his own and others. Basically मुझे ये सेमेस्टर पढ़े एक जो है 6 to 4 month हो गए हैं, तो कुछ वर्ड्स की मुझे खुद नहीं समझ आती. इट्स टर्न लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें आर नहीं लिखा हुआ, वो आपने खुद ही ऐड कर लेना है. उसके बाद आता है इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड ही हैज़ डिस्कस 3 मेन थिंग्स: क्वालिफिकेशन ऑफ पोइट, लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री. अच्छा, क्वालिफिकेशन ऑफ पोइट में आपने जस्ट यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करना है, ठीक है. विलियम वर्ड्सवर्थ in the preface to the lyrical ballad didn't describe any particular qualification for poet. Instead, he highlighted the importance of the poet's ability to represent the feelings and emotions of common people in a way that feels natural and powerful. Wordsworth felt that poetry should be written in simple and direct language. Therefore, in his point of view, the most important qualification for a poet was a deep understanding of the lives and experiences of common people and the ability to represent these experiences in a powerful and memorable way. उसके बाद आता है लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. विलियम वर्ड्सवर्थ सेड पोइट्री शुड बी रिटन इन अ रियल लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन rather than high and complex language. The words will not be read a once times, whereas the prose is read once. The words will be read 100 times, whereas the prose is read once. He believed that poetry main goal should be bring pleasure to the reader through the rhythm and beautiful expression of emotions. He believed that poetry should be written in a language of common people instead of using the complex vocabulary. ठीक है, ये कहता था कि जो पोइट्री होती है वो कॉमन लैंग्वेज में लिखी जाती है, ना कि फिर कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी यूज़ की जाए, बल्कि कॉमन लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है. उसके बाद आ जाता है सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज इन अ पोइट्री. सारा कुछ उसके बारे में भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है. आगे आ जाता है सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री. द थर्ड एंड लास्ट थिंग विच ही हैज़ डिस्कस्ड इन टू द लिरिकल बैलेड is the subject of poetry. He said that subject should be common life, ordinary thing, feeling that are universal, beauty of nature that is permanent. According to Wordsworth, the subject matter of poetry comes from the natural world, human event, human feelings and emotions. Wordsworth loves prefer to write about everyday events and activities. Also, he thinks poetry provides the overflowing of strong emotions, strong human emotions. So यहाँ पे हमारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है. और एक और बात आपको बता दूँ, अगर आपको इन सारे नोट्स का PDF चाहिए तो वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप लोग सिंपली मेरी डिस्क्रिप्शन को ओपन करें और वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लें. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें. नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.